Hi, in this video we are discussing the fourth numerical from the exercise for the chapter Laws of Motion, which is also the fourth chapter for 11th standard physics. Now, if you see this question, so you'll be like, कि अरे we have a lot of information that's been given to us in the question and बहुत सारा given data वगैरह है. And along with this question हमारे पास एक reference diagram भी है जो कि question में ही दिया गया है. एंड व्हाट विल ट्राई टू डू इज कि ये रेफरेंस डायग्राम के बेसिस पर ही इस क्वेश्चन को समझे. सो सबसे पहले इस क्वेश्चन पे विल बी स्टडिंग द इंटरप्ले बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स. सो वी हैव मल्टीपल सिस्टम्स जिसमें का सबसे पहला सिस्टम है एक वर्टिकल लोड. ठीक है, सो एक लोड है जो कि एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है and based on this we have to calculate certain bits of information. And then we have another vertical sets of system जहाँ पर एक pan का system है एंड उसके बेसिस पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमको निकालनी पड़ेगी इन द फर्दर सेक्शन ऑफ दिस न्यूमेरिकल. बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ लोड एंड अ पैन सिस्टम इज दैट कि लोड का जो वेट होता है वो हमेशा फिक्स्ड या कांस्टेंट होता है, वेयर एज जो पैन का जो टोटल वेट होता है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, दैट इज वेरिएबल बिकॉज this weight is made up of two components. One is the weight of the pan which has to be the fixed and the other is a variable component that is कि pan में हम एक kg के multiple plates डाल सकते हैं and based on how many number of 1 kg plates are there that weight can keep on changing. तो इस बेसिस पर ये दोनों सिस्टम्स को कनेक्ट किया गया है एक हॉरिजॉन्टल सिस्टम के साथ विच इज अ ब्लॉक. एज यू कैन सी दोनों सिस्टम के एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे लगे हुए हैं एंड देन इसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि दिस ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन द टेबल एंड द टेबल और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है. सो वेन एवर वी आर डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वी नीड टू ऑल्सो कीप फ्रिक्शन इन आवर माइंड एज वेल. एंड बेस्ड ऑन ऑल दिस इन्फॉर्मेशन जो हमको दी गई है बिट्स एंड पीसेस में वी हैव टू कैलकुलेट. फर्स्ट थिंग वी हैव टू नोट कि ये जो सिस्टम है जो आप देख रहे हो इस रेफरेंस डायग्राम में ये बाय डिफॉल्ट से इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा. सो इसको इक्विलिब्रियम में डालने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी. सो बेसिकली व्हाट मेहनत, सो वी हैव टू कीप ऑन एडिंग 1 kg का प्लेट्स. ओके, बिकॉज इनिशियली सिस्टम इज बायस्ड टुवर्ड्स दिस लोड. सो हमको वही ढूंढना है कि कितने नंबर ऑफ प्लेट्स, मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट्स वी नीड टू एड सो दैट जो है ये बायस जो है ओवरकम हो जाएगा एंड दिस सिस्टम स्टेज एट दिस पोजिशन, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे. And once we have calculated the minimum, we also have to calculate now the maximum number of 1 kg plates जो हम इस सिस्टम में डाल सकते हैं so that ये सिस्टम जो है अब इस डायरेक्शन में ना मूव कर जाए. So दोनों है, minimum number of weights to prevent system from going in this direction and then maximum number of plates to prevent system from going in this direction. So ऐसे कुछ हमारे कैलकुलेशंस हो गए. बट सबसे पहले लेट अस राइट ऑल द गिवन डेटा दैट्स बीन गिवन टू अस. सो गिवन डेटा में हमें जो है हॉरिजॉन्टल ब्लॉक का वेट दिया गया है बट ये केजी वेट के यूनिट में दिया गया है. सो वी हैव डन अ स्मॉल कन्वर्जन इनटू द न्यूटन्स ओवर हियर. हमें जो है फ्रिक्शन की थ्रेशोल्ड वैल्यू दी गई है एंड दिस थ्रेशोल्ड वैल्यू इज गिवन इन टर्म्स ऑफ वेट. सो हमको बोला है कि वेट का 10% है. वेट किसका, तो ये ब्लॉक का वेट. सो इस ब्लॉक के 10% वेट को अगर हम कैलकुलेट करेंगे सो इस 350 का 10%, सो 350 का 10% इज 35 न्यूटन. सो दिस इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर फ्रिक्शन. एंड देन हमको जो है 3 और वेट्स दिए गए हैं. सबसे पहले इस लोड का फिक्स्ड वेट दिया गया है विच इज 20 kg वेट विच अगेन इन न्यूटन कम्स आउट टू बी 200. एंड देन हमको इस टोटल वेट के दो कंपोनेंट्स के बारे में दिया गया है. वन इज द फिक्स कंपोनेंट का वेट दिया गया है, दैट इज द वेट ऑफ द पैन विच इज 2 kg वेट. एंड देन यूनिट वेट दिया गया है, यूनिट वेट ऑफ द प्लेट्स विच कैन बी एडेड टू द पैन. ठीक है, based on this particular information we are required to calculate the number of plates that can be added, both minimum number and the maximum number, such that the condition for equilibrium is maintained, or as we say that the block does not slide eventually. So सबसे पहले let's get started. So we'll solve for the minimum condition first and we'll be using the FBD for our horizontal block in this case. So initially हम क्या assume कर रहे हैं कि number of plates कम है, minimum है. So tension in string 1 should dominate the tension in string 2 because of which this block should move towards tension in string 1 and इसी motion को oppose करेगा हमारा friction by acting in the opposite direction. So from this particular FBD we can say that this tension in string 1 has to balance both these forces, that is T2 and F. हमें जो है इस F की वैल्यू गिवन है
that is the threshold value of the friction. If I substitute that value, I get a better equation for both the tension. इसमें हमें T2 ढूंढना है, but we don't know T1 yet. So let's first calculate T1. So in order to calculate T1, we'll be using the FBD for the vertical load. आप FBD देखकर you can say that both the forces should balance each other. And हमको जो है ये जो weight of load है वो given है, that is 200 Newton. So from this we can say tension in string 1 should be 200 Newtons. So now if you can see from equation 1 and equation 2, if we were to substitute the values, I would get the value for our tension T2, and that value comes out to be 165 Newton. Okay, so based on this, हमने जो है tension in string 2 ढूंढ लिया है. But as you can see, this is not what we are required to find. This is not our final aim. Final aim is to find the number of plates. So now let us see the system which has the number of plates. So this is the pan system. So अगर इसमें आप देख सकते हो कि these two forces are balancing each other out, where W2 is the total weight of the pans. So, okay, so if I were to calculate W2 from this particular FBD, I would get W2 equal to T2, which is 165 Newtons. Now for ease of calculation, I'll be converting this Newton into kg weight. So I get W2, that is the total weight of the pan system, as 16.5 kg weight. This is the total weight of the pan which this pan system must have to maintain a state of equilibrium such that the horizontal block does not slide. So in this case, हमको already पता है कि this total weight is made up of a fixed element, that is the weight of the pan given to us, and then number of one unit weight, and this unit weight is given to us. This is what is unknown to us, and this is what we are required to find as well. So let us build an equation to get n from this particular statement. So अगर हम n को calculate करेंगे, so we'll get the total weight minus the weight of the pan divided by the unit weight. ठीक है, if we were to substitute all the values, हमारा n का value comes out to be 14.5. So this is the minimum number of plates जो कि वो pan में होने चाहिए to make sure our horizontal block does not slide or to maintain equilibrium. But this 14.5 is a decimal value, so we need the closest integer value which is greater than this, not less than, greater than this, because this is the minimum condition. ठीक है, तो इसके लिए my n becomes 15. So my final answer is a minimum of 15 weights should be present in pan all the time to make sure that the block does not slide. इसी basis पे similar way में let us now calculate the maximum number of weights which we can add to the pan. So अब जब हमने minimum number of weights डाल दिया है, henceforth whatever weight will keep on adding will increase my T2 component, and because of this my T2 will now start to dominate the tension in string 1. So now the condition is that कि मेरा T2 is greater than T1. Because of this sudden change, my block would like to move in the direction of T2. So इस motion को oppose करने के लिए we'll have the friction in the opposite direction. Okay, so based on this FBD, we would get a equation for the forces in horizontal direction as this. इस particular question के हिसाब से we can find out the value for T2 instantly, because हमको जो है फ्रिक्शन का थ्रेशोल्ड वैल्यू भी पता है और प्रीवियस केस से हमने T1 का वैल्यू भी ढूंढ लिया था. As you can see, T1 was 200 in the previous case, and T1 is constant. T1 is never going to change. So based on this, I can say the maximum condition के लिए T2 का जो वैल्यू है that would be 235 newtons. And similarly, since T2 is 235 newtons, हमने previously देखा था कि जो हमारे pan system का total weight है that is equal to T2 as well. So I can say if T2 is 235 newtons, that means my total pan weight should also be 235 newtons. Again, we'll represent it in terms of kg weight for better calculations. And now if I were to calculate the maximum number of plates which we can add to maintain equilibrium, I'll use the similar method, and based on this I get n as 21.5. So this is the number of plates if present in the pan. My block will continue to stay in equilibrium. The moment this value is exceeded, block will start to move in the direction of pan.
So I need, now this is a decimal value, I need the closest integer value which is less than, because I cannot go above this value. So I need a closest integer value which is less than this value, that is 21.5. So the closest integer is 21. So I say that the maximum number of 1 kg weights that can be added to the system is 21 to ensure block from sliding. So this was it. This was the solution for the fourth numerical. The PDF of the solution is present in the description, so make sure you check that out as well. With this, I hope this helped you. Thank you.